हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 7 में आज हम देखेंगे प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस 8255। सो प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस 8255 is programmable peripheral interface means PPI 8255, right? So it is a general purpose programmable parallel input output device, right? It is designed to transfer the data from simple input output to interrupt input output under certain conditions are required. So it can be used with almost any microprocessor. It consists of 3 8-bit bidirectional input output ports, means total 24 input output lines, which can be configured as per the requirement. इसमें 3 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है जो डिफरेंट मोड्स में डिफरेंट मॉड्यूल्स में प्रोग्रामेबल है, राइट? टू प्रोग्राम द फंक्शन ऑल 3 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स इट कंटेन्स अ रजिस्टर नोन एज अ कंट्रोल रजिस्टर. सो कंट्रोल रजिस्टर हर एक इनपुट आउटपुट पोर्ट का फंक्शन डिफाइन करता है कि ये क्या काम करेगा, कौन सा पोर्ट क्या काम करेगा और कौन से मोड में वो ऑपरेट होगी, राइट? So 8255 is a general purpose in nature. ये different devices को connect करने के लिए facilities provide करता है, right? So it is used frequently in different applications. It is flexible, versatile, and economical. Means efficient, right? But it is somewhat complex. So the intent is to provide complete input-output interface in a single chip. This chip directly interfaces to the data bus of the processor, right? So it is a programmable parallel input-output device. It contains 24 programmable input-output pins, जो arranged है as a 8-bit ports and 4-bit ports, right? So इसके पास 3 8-bit ports है. Port A is of 8-bit. पोर्ट सी, इसके 2 पार्ट है, पोर्ट सी का अपर पार्ट एंड सी लोअर पार्ट, दोनों 4 बिट के. ये टोटल पोर्ट सी 8 बिट का है, बट इसका अपर पार्ट है लोअर पार्ट है, सो ये 4 बिट में डिवाइड हो जाता है. एंड पोर्ट बी इज ऑफ 8 बिट. सो दिस इज ग्रुप ए. ये जो पोर्ट ए एंड पोर्ट सी का अपर पार्ट है 4 बिट का, तो ये ग्रुप ए है. ये पोर्ट सी का लोअर पार्ट इज ऑफ 4 बिट एंड पोर्ट बी इज ऑफ 8 बिट. ये पूरा ग्रुप बी है 8255 प्रोसेसर का. सो ये जनरली हमारा 8085 का पिन डायग्राम है, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने आगे की यूनिट में पढ़ लिया है. इस हिसाब से जो पिन्स होगी उसका इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा. सो दिस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस are connected with these ports, port A, B and C, right? So 8255 has 3 ports, port A, B and C. Port A contains 8 bit input output latch and buffer. Port B is similar to port A. Port C splits into 2 parts. Port C lower PC which contains pins PC3 to PC0, means port C3 to port C0, and port C upper, इसमें कौन सी पिन है PC7 to PC4 by the controller. So these 3 ports are further divided into 2 groups. Group A includes port A and upper 4 bit of port C, and group B includes port B and lower 4 bit of port C. So these 2 groups can be programmed in 3 different modes. 3 modes है, 3 operation modes है. Mode 0, second mode is mode 1 and third mode is mode 2. अब इसका हम ब्लॉक डायग्राम देखें. So group A, group B, group C, ग्रुप बी, उसमें कौन सा पोर्ट आएगा सी लोअर, एंड ग्रुप ए में पोर्ट सी का अपर पार्ट, ठीक है.
ग्रुप ए का कंट्रोल ग्रुप ए मीन्स पोर्ट ए में भी जाएगा और ग्रुप ए का जो पोर्ट सी है उसका अपर पार्ट में जाएगा। सेम कंट्रोल बी में कभी कहा जाएगा दोनों ग्रुप बी में, पोर्ट सी लोअर में एंड पोर्ट बी राइट। अब डेटा बस बफर, ठीक है, D0 to D7, सो ये 8 बिट बाई डायरेक्शनल डेटा बस लाइन्स है जो कनेक्टेड है सिस्टम डेटा बस के साथ राइट। सो ये CPU एंड 8255 के बीच में डेटा ट्रांसफर करती है, दैट्स व्हाई इट इज अ 8 बिट बाई डायरेक्शनल ट्राई स्टेट डेटा बस बफर जो 8255 इंटरनल डेटा बस एंड सिस्टम डेटा बस के बीच का एक इंटरफेस है राइट। सो रीड एंड राइट कंट्रोल सिग्नल्स इस डेटा बफर का डायरेक्शन डिसाइड करता है। सो जब रीड सिग्नल एक्टिवेट होता है तब ये डेटा को सिस्टम डेटा बस में डेटा ट्रांसमिट करता है राइट, और ये जब राइट सिग्नल एक्टिवेट होता है तब सिस्टम डेटा बस में से डेटा ये रिसीव करेगा राइट। सो दिस इज कनेक्टेड विथ ग्रुप ए एंड बी एंड यहाँ पे ये डेटा बस ग्रुप A and B के साथ दोनों के साथ कनेक्टेड है, इज अ बाई डायरेक्शनल डेटा बस राइट। सो ये 8 बिट इंटरनल डेटा बस से कनेक्टेड है। सो कंट्रोल ये तो हमने देखा, बट अब क्या आएगा, रीड एंड राइट कंट्रोल लॉजिक। सो ये ब्लॉक सिस्टम कंट्रोल बस एड्रेस बस में से इसमें क्या होगा, इस ब्लॉक में ये जो सिस्टम कंट्रोल बस है ठीक है, एड्रेस बस उसमें से इनपुट एक्सेप्ट करेगा एंड ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, लाइक इनपुट रीड ऑपरेशन, आउटपुट राइट ऑपरेशन राइट एंड डिसेबल फंक्शन। सो ये रीड एंड राइट कंट्रोल लॉजिक ये ग्रुप ए एंड ग्रुप बी एंड पोर्ट ए बी एंड सी तीनों के साथ कनेक्टेड है ठीक है। अब ये इनपुट आउटपुट PA7 to PA0 मीन्स पोर्ट ए पिन 0 to 7 ये 8 बिट बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है। सो जब ये यूज होती है ये किस लिए यूज होती है, ये डिवाइस को डेटा सेंड करने के लिए यूज होती है या फिर डिवाइस में से डेटा रीड करने के लिए यूज होती है। सो PB0 to PB7 राइट, तो ये पोर्ट भी पिन 0 to 7, सो ये भी बाई डायरेक्शनल पिन्स है, इनपुट आउटपुट पिन्स है। इसका भी PA0 to PA7 के जैसा ही सेम ही यूज है, डेटा को रीड करना पोर्ट में से या फिर राइट करना। एंड PC0 to PC7 पोर्ट C पिन्स 0 to 7 राइट। तो ये 8 बिट बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पिन्स है। ये लाइन्स डिवाइड होती है दो सेक्शन में, PC0 एंड PC3 में, PC3 to PC0 सॉरी PC0 to PC3 एंड PC4 to PC7। सो ये दो सेक्शंस इंडिविजुअल होते हैं। 4 बिट डेटा को दो सेपरेट पोर्ट C सेक्शन में ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं ठीक है। सो यहाँ पे जो 4 बिट है वो पोर्ट C एंड ये लोअर पोर्ट C उसके लिए, एंड दीज आर हियर power suppliers for fiber। read and write control logic। so read में this is an active low signal that enables read operation. When signal is low, MPU reads the data from selected input-output ports of 8255A। मीन्स ये एक्टिव लो इनपुट सिग्नल है जो दूसरे सिग्नल्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है डेटा लाइंस का यूज करके एंड डेटा को CPU में सेंड करने के लिए ये क्या करेगा, डेटा लाइंस का यूज करेगा राइट। दिस इज एन एक्टिव लो सिग्नल that enables write operation. When signal is low, MPU writes data into selected input-output port और कंट्रोल रजिस्टर। ये भी एक्टिव लो इनपुट सिग्नल है, ये दूसरे सिग्नल के साथ कोऑर्डिनेट करके डेटा 8255 को सेंड करता है राइट। रीसेट, दिस इज एन एक्टिव हाई सिग्नल यूज्ड टू रीसेट द डिवाइस, दैट मींस क्लियर कंट्रोल रजिस्टर्स।
जब 8255 रीसेट होता है तब वो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर एंड दूसरे सभी पोर्ट्स को जो इनपुट मोड्स के साथ सेट होते हैं उन सबको क्या करता है, क्लियर कर देता है, राइट. नाउ चिप सिलेक्ट. अगर this is also an active low signal. When it is low, the data is transferred to from 8085. Chip select signal is the master chip select. Right? A0 and A1 specify one of the input ports of control register. अगर ये तीनों इनपुट्स यहाँ पे A1, A0, A1, A0 एंड ये चिप सिलेक्ट, ये तीनों इनपुट अगर सिलेक्टेड है, अगर ये तीनों इनपुट 0 है तो पोर्ट ए सिलेक्ट होगा, राइट. वैसे तो ये हम आगे के साइड में देखते हैं. ये तीनों इनपुट है, चिप सिलेक्ट A1, A0, और कौन सा सिलेक्ट होगा ये देखते हैं ऑपरेशन. सो जब ये तीनों इनपुट 0 हो गए तब कौन सा सिलेक्ट होगा, पोर्ट ए सिलेक्ट होगा. ठीक है, 0 0 0 इनपुट मिलेगा तो पोर्ट ए सिलेक्ट होगा. ठीक है, 0 0 1 इनपुट मिलेगा तो पोर्ट बी सिलेक्ट होगा. मीन्स रीड ऑपरेशन होगा पोर्ट बी में से डेटाबेस. डेटाबेस क्या करेगा, पोर्ट बी में से रीड ऑपरेशन करेगा. जब इसका इनपुट होगा 0 1 0, दैट मीन्स पोर्ट सी सिलेक्ट होगा. मीन्स इनपुट रीड ऑपरेशन होगा फ्रॉम पोर्ट सी टू डेटाबेस. जब इनपुट होगा 0 1 1 तब आउटपुट राइट ऑपरेशन होगा डेटाबेस टू कंट्रोल रजिस्टर, राइट. एंड जब चिप सिलेक्ट में इनपुट जाएगा 1, बट बाकी A1 एंड A2 का कोई इनपुट नहीं होगा, दैट मीन्स डिसेबल फंक्शन, मीन्स डेटा बस राइट स्टेटेड एंड 8255 इज नॉट सिलेक्टेड, राइट. नाउ 8255 operating modes. IC provides one control word register. So इस control word जो रजिस्टर है, ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, उसके जो कंटेंट है दैट मीन्स डेटा है, उसको क्या कहेंगे, कंट्रोल वर्ड. सो द कंटेंट्स ऑफ दिस रजिस्टर आर नोन एज अ कंट्रोल वर्ड. इट्स फंक्शन इज टू राइट कंट्रोल वर्ड when A0 is 1 and A1 is 1. It is selected when A0 is 1, A1 is 1, chip select is 0 and write is 0. The read operation is not allowed for control register. The bit pattern loaded in control word register specify an input-output function for each port. Means control word register में क्या होगी, एक बीट पैटर्न होगी, बीट की पैटर्न होगी. D0 to D7 जो बीट्स है उसकी हर एक बीट की पैटर्न होगी. उस बीट्स के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सा इनपुट आउटपुट फंक्शन हर एक पोर्ट के लिए डिसाइड होगा, कौन सा ऑपरेशन होगा, मीन्स मोड ऑफ द ऑपरेशन डिसाइड होगा कि each port the mode of operation in which the ports are to be used, कौन सा पोर्ट यूज होगा, राइट. So there are two different control word formats which specify two basics. एक BSR है, bit set reset mode, and second is input output mode. So two basics mode are selected by if D7 is 1, then it is input output mode. When D7 is 0, D7 की वैल्यू bit कौन सी होगी, D7 में 0 होगी, then it is a BSR, bit set reset mode. So three different operating modes, mode 0, mode 1, mode 2. So ये mode 0, 1 and 2 है, ये input output ports के modes, right? Input output ports में 3 types के modes है, mode 0, 1 and 2. Now if D7 is 0, then it will BSR mode, bit set reset mode, right? For port C, no effect on input output mode. Port C में कोई effect नहीं होगा input output mode में, port C का. If it is input output mode,
कब ये इनपुट आउटपुट मोड होगा? जब ये सिलेक्ट 1 होगी, D7 की वैल्यू, D7 की बिट 1 होगी, दैट इज देन इट इज इनपुट आउटपुट मोड। इसमें 3 पार्ट्स है, मोड 0, मोड 1, मोड 2। मोड 0 is a simple input output, right, for ports A, B and C. This is handshake input output for ports A and or B. For port C, bits are used for handshake. And mode 2, bidirectional data bus for mode A. So port B is either mode 0 or 1. ये सिलेक्ट करेगा मोड, मीन्स पोर्ट बी कौन सा मोड सिलेक्ट करेगा, 0 या 1। पोर्ट सी बिट्स आर यूज्ड फॉर हैंडशेक। सो इन सबको हम 1 by 1 समझते हैं। नाउ अब आएगा मोड 0। फर्स्ट इज मोड 0। सो सिंपल इनपुट आउटपुट मोड, राइट। मोड 0 में सभी पोर्ट्स पोर्ट ए, बी एंड सी सिंपल इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन अलग अलग प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो डेटा है वो पोर्ट में से सिंपली रीड होगा या फिर पोर्ट में से पोर्ट में राइट होगा, राइट। सो इन मोड 0 देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन बिटवीन फंक्शन ऑफ पोर्ट्स। पोर्ट सी, 2 सेक्शन ऑफ पोर्ट्स अपर, पोर्ट सी अपर एंड पोर्ट सी लोअर, वो इंडिविजुअली प्रोग्राम हो गए अपने 4 बिट्स, क्योंकि ये दोनों की 4 बिट अलग है, तो ये 4 बिट्स इंडिविजुअली प्रोग्राम होंगे, राइट। सो इन दिस मोड पोर्ट A and B used as 2 8-bit ports and port C as 2 4-bit ports. So each port can be programmed in either input mode or output mode. Ports do not have handshake or interrupt capability. Right. So now mode 1, input or output with handshake. In mode 1, A or group B can be used, right? So और एक ग्रुप में 8 बिट लैच्ड इनपुट और आउटपुट कोड होगा एंड पोर्ट सी की 3 बिट्स होंगी। मोड 1 में क्या होगा, 8 बिट लैच्ड इनपुट और आउटपुट कोड के लिए कोड यूज करेगा और पोर्ट सी की 3 बिट्स यूज करेगा, 3 बिट्स पोर्ट सी यूज करेगा। जब पोर्ट ए यूज होगी मोड 1 में, पोर्ट सी की अपर बिट्स यूज होगी टू कंट्रोल द पोर्ट ए, एंड जब पोर्ट बी यूज करेगा मोड 1 को, तो पोर्ट सी की जो लोअर बिट्स है विच आर यूज्ड टू कंट्रोल द पोर्ट बी। जब पीए मींस पोर्ट ए इज यूज्ड एज इनपुट मोड इन मोड 1, द बिट्स PC3, PC4 and PC5 are used for control, and when PA is used as output mode in mode 1, the bits PC3, PC6 and PC7 are used for control, right? जब PB यूज होगा पोर्ट B मोड 1 में, so bits PC0, PC1 and PC2 are used for controlling both input and output. So if both PA and PB are programmed in mode 1, it uses 6 port C bits to control. The remaining 2 bits are not used for mode 1. क्योंकि ये टोटल ये भी और ये और कितने बिट्स दोनों में पार्टीशन इसीलिए, राइट। सो जब 8085 सिग्नल गेट करेगा, 8085 क्या करेगा, रीड डेटा करेगा, 8285 पोर्ट में से 8255 पोर्ट में से डेटा रीड करेगा। Now 8255 is ready to accept the next data byte. It will remove the signal of data present. So if the next data byte is available in output or input device, then it will repeat the whole process, right? So जो ऊपर का फंक्शन है डेटा रीड करने का, which is of handshake signal, is can be performed using mode 0, right? Handshake signal are exchanged between MPU and peripheral prior to data transfer. So in this mode, port A, B
are used 8-bit as a 8-bit ports. ये दोनों 8-bit ports में use हो गए. Mode 1 is a handshake mode whereby ports A and or B used bits from port C as handshake signal. इसकी 2 bit और इसकी 2 bit यूज होगी ऐसा. In handshake mode, 2 types of input-output data transfer can be implemented: status check and interrupt. Right? So, this function of handshake signals can also be performed using mode 0. Handshake signal है जो वो handshake mode है वो mode 0 का यूज करके भी हम perform कर सकते हैं. But in that case, 8085 has to read the status of peripheral, check the status, and then take the decision on that. Right? This process will waste the valuable time for processor. And handshaking signals are used to transfer data between devices whose data transfer speed are not the same. For example, computer data send कर सकता है प्रिंटर को, ठीक है, बहुत सारी स्पीड में वो डेटा सेंड कर सकता है प्रिंटर को, बट प्रिंटर कैन नॉट एक्सेप्ट द डेटा एंड प्रिंट इट एट रेट. राइट? हमने तो प्रिंट देने का कमांड दे दिया, पर प्रिंटर इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा कमांड को. सो कंप्यूटर हैज टू सेंड द डेटा एट अ स्पीड दैट द प्रिंटर कैन एक्सेप्ट. प्रिंटर एक्सेप्ट कर सके उतनी स्पीड से हमको डेटा भेजना पड़ेगा. सच डेटा ट्रांसफर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द हेल्प ऑफ हैंडशेकिंग सिग्नल्स. Now, mode 2, bidirectional input-output. So, in this mode, port A can be configured as bidirectional port and port B are either in mode 0 or mode 1. Port A है वो कैसे configure किया गया है as a bidirectional port. Port B है वो यूज होगा as mode 0 या फिर mode 1 यूज करेगा, दोनों में से. So in this mode, port A is used as input and output for transmitting and receiving data from peripheral to 8255. 8255 में से डेटा ट्रांसमिट करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए. That means it is a bidirectional port in this mode. Right? So the transfer of data is achieved by the port C handshake signal. The group B can be in mode 0 or mode 1. So, port A uses 5 signals from port C. Port C का 5 signals use करेगा as a handshake signal for data transfer. And the remaining 3 signals from port C can be used either as a simple input-output or as a handshake for port B. Right? The bidirectional data is transferred through port A. So it consists of input and output latch, and mode 2 is a combination of mode 1 input and output both at a time to port A. So the interrupt signals of input and output mode are combined to generate common interrupt signal CPU. Right? Now let's see features of 8255. It consists 3 8-bit input-output ports. कौन से PA, PB and PC both तीनों 8-bit के, right? So address and data bus must be externally demultiplexed, and it has improved PC driving capability. Means digital control driving capacity. Now 8255 control register. So, control register or control logic or command word register. Command word register is an 8-bit register used to select the modes of operation and input-output designation of the ports. ये क्या है? ये 8-bit रजिस्टर, राइट? ये किसके लिए यूज होता है? तो मोड्स, ऑपरेशन के मोड्स ऑफ द ऑपरेशन को सिलेक्ट करने के लिए. ये इनपुट आउटपुट डेजिग्नेटेड कोड्स भी हैं. सो द कंटेंट्स ऑफ दिस कंट्रोल रजिस्टर इज नोन एज अ कंट्रोल वर्ड, राइट?
नाउ कंट्रोल वर्ड, कंट्रोल रजिस्टर के जो कंटेंट्स होते हैं उसको कंट्रोल वर्ड कहते हैं, राइट। सो ये कंटेंट हर एक कोड के इनपुट आउटपुट फंक्शन को स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा कोड कौन सा इनपुट आउटपुट फंक्शन मींस कौन सा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करेंगे। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर को एक्सेस करके उसमें कंट्रोल वर्ड लिख सकते हैं बाय सिलेक्टिंग एड्रेस लाइंस 0 and 1, ये 0 और 1 इन हाई कंडीशन मींस दोनों लाइंस होगी ऑन, राइट, दोनों ऑन होगी। तो ये रजिस्टर रीड ऑपरेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। कंट्रोल वर्ड की मोस्ट सिग्निफिकेंट D7 स्पेसिफाई करती है कि ये इनपुट आउटपुट मोड होगा या फिर बिट सेट और रीसेट मोड होगा। तो D7 1 होगा तो 8255 इनपुट आउटपुट मोड के लिए काम करेगा, एंड D7 0 होगा, D7 की बिट 0 होगी तो कोड C ऑपरेट होगा इन बिट सेट रीसेट मोड। So BSR mode is not affects the functioning of code A and code B. ये जो steps है इस फिगर में ये कम्युनिकेशन है जो पेरिफेरल डिवाइस थ्रू पोर्ट ऑफ 8255। ग्रुप B के लिए पोर्ट D0 की बीट अगर 1 होगी दैट मीन्स ये इनपुट होगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर ये बीट 0 होगी दैट मीन्स आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसके लिए पोर्ट C लोअर के लिए मीन्स बिट्स और कौन सी पिन्स होगी इसमें अभी एक्टिव होगी PC0 to PC3। अगर D1 की बीट 1 होगी दैट मीन्स इनपुट, एंड अगर ये 0 होगी दैट मीन्स आउटपुट ऑपरेशन होगा पोर्ट B। ये जो है D2B ये मोड सिलेक्शन के लिए है, मीन्स अगर ये बीट 1 होगी दैट मीन्स मोड 1 सिलेक्ट होगा, एंड अगर ये 0 होगी बीट D2B दैट मीन्स मोड 0 काम करेगा। ग्रुप A के लिए कितनी बीट है D3। ग्रुप A डिसाइड कैसे होगा D3 D4 D5 D6 बिट्स। अगर इसमें D3 बीट अगर 1 है तो इनपुट ऑपरेशन एंड D3 0 है दैट मीन्स आउटपुट ऑपरेशन। पोर्ट कौन सा होगा यहाँ पे ग्रुप A का पोर्ट C अपर मीन्स पोर्ट C की 4 to 7 पिन्स, एंड यहाँ पे पोर्ट A के लिए ये D4 बिट सिलेक्ट होगी, अगर 1 होगा तो इनपुट 0 होगा तो आउटपुट। ये दोनों बीट्स है ग्रुप A में D5 एंड D6 बिट्स, ये सिलेक्ट करता है मोड सिलेक्शन कि कौन सा मोड होगा। ये दोनों बिट 0 0 होगी दैट मीन्स मोड 0, 0 1 होगा दैट मीन्स मोड 2, एंड 1 and X दैट मीन्स मोड 2। D7 is for BSR मोड, राइट। सो अगर ये 1 होगा, अरे D7 बिट्स डिसाइड करता है कि 1 होगा तो इनपुट आउटपुट मोड होगा और 0 होगा तो BSR मोड होगा। ये D7 की बीट पे से डिपेंडेंट। सो कंट्रोल वर्ड एक्सेस टू राइट अ कंट्रोल वर्ड व्हेन A0 and A1 आर एट लॉजिक 1, राइट। सो A0 and A1 आर एट लॉजिक 1 मीन्स ग्रुप B सिलेक्ट होगा यहाँ पे ये तीनों बिट्स पे, ये चारों बिट्स ग्रुप A के लिए है, एंड पोर्ट C है ये दोनों के लिए शेयरिंग। सो टू कम्युनिकेट विद पेरिफेरल थ्रू 8255 3 steps are necessary. Determine the address of ports A, B and C and of the control register according to chip select logic and address lines A0 and A1। मीन्स अगर हमको पेरिफेरल डिवाइस मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइस से जब 8255 का कम्युनिकेशन होता है तो उसमें 3 स्टेप्स नेसेसरी है। पहला स्टेप क्या है कि पोर्ट A, B एंड C का एड्रेस डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है, एंड ऑल्सो द एड्रेस ऑफ द कंट्रोल रजिस्टर अकॉर्डिंग टू द चिप सिलेक्ट लॉजिक एंड एड्रेस लाइंस A0 A1। मीन्स ये A0 A1 एंड चिप सिलेक्ट का ऊपर इन तीनों का जो इनपुट होगा उसके ऊपर से कंट्रोल रजिस्टर डिसाइड होगा उसका एड्रेस, एंड राइट कंट्रोल वर्ड एंड द कंट्रोल रजिस्टर। फिर हम क्या करेंगे कंट्रोल रजिस्टर में कंट्रोल वर्ड लिखेंगे, कंट्रोल वर्ड मीन्स डेटा।
And after then write input output instructions to communicate the peripheral through port A, B and C. Right? क्यों? क्योंकि हम port A, B and C उसके यूज से आउटपुट या इनपुट हम डिस्प्ले करेंगे. राइट? सो राइट एंड कंट्रोल वर्ड आइडेंटिफाई मोड 0. हमको क्या कौन सा कंट्रोल वर्ड लिखना है कि उस कंट्रोल वर्ड में हमको ऐसा डेटा D0 टू D7 में सेट करना है कि हम मोड 0 को सेट कर सकें. सो कॉन्फ़िगर पोर्ट A एंड पोर्ट C upper as output ports and port B and port C lower as an input ports. ये ग्रुप A के लिए, ये ग्रुप B के लिए. अब पोर्ट C lower उसकी PC0 टू PC3 पिन्स. ये 1 होगा तो इनपुट, 0 होगा तो आउटपुट. सो ये 1 एज ए इनपुट हमने एंटर किया. यहाँ पे हमने क्या किया 1 फॉर इनपुट, क्योंकि ये इनपुट पोर्ट्स हमने लिए. ठीक है, पोर्ट B एंड C लोअर एज एन इनपुट पोर्ट. एंड यहाँ पे 0 मोड सिलेक्शन. क्यों? क्योंकि हमको मोड 0 आइडेंटिफाई करना है. दैट मीन्स यहाँ पे हम 0 लिखेंगे. अगर ये 0 होगा दैट मीन्स ये D2 0 होगी. दैट मीन्स ये मोड 0 होगा. नाउ ये आउटपुट पोर्ट कंसिडर करनी है. पोर्ट A एंड पोर्ट C अपर एज एन आउटपुट पोर्ट. सो ये भी 0, ये भी, ये दोनों 0 0. क्यों? क्योंकि हमको मोड 0 आइडेंटिफाई करना है. अगर ये बिट दोनों 0 होगी दैट मीन्स इट इज अ मोड 0. एंड D7 क्या होगा? हमको कौन सा सिलेक्ट करना है? मोड 0. मोड 0 किस में आता है? इनपुट आउटपुट मोड में. इनपुट आउटपुट मोड के 3 पार्ट्स कौन से हैं? मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2. सॉरी, मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2 है. सो यहाँ पे क्या आएगा 1. दैट मीन्स इनपुट आउटपुट मोड एंड मोड 0. राइट द कंट्रोल वर्ड टू आइडेंटिफाई मोड 0. ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? कॉन्फ़िगर पोर्ट A एंड पोर्ट CU एज आउटपुट पोर्ट्स. आउटपुट पोर्ट्स कब होते हैं? पोर्ट A एंड पोर्ट C अपर की ये जब तीनों पोर्ट A इनकी जब वैल्यू 0 होगी तभी ये आउटपुट पोर्ट होंगे. राइट? ये भी 0 होगा तभी आउटपुट पोर्ट होगा. राइट? यहाँ पे क्या होगा? ये 1 होगा, 0 होगा तब मोड 0 सिलेक्ट होगा, 1 होगा तब ये इनपुट पोर्ट होगा. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पोर्ट A एंड पोर्ट C अपर इन सबको एज आउटपुट पोर्ट कंसिडर करेंगे. दैट मीन्स ये दोनों बिट 0 होगी तो यहाँ पे ये अगर 0 0 होगा दैट मीन्स मोड सिलेक्टेड इज 0. राइट? कंट्रोल वर्ड कौन सा है? 8 3. ये कैसे पता चला? सो ये 1 0 0 0 इज 8, 0 0 1 1 इज 3. एंड यहाँ पे 1 सिलेक्ट क्यों किया? क्योंकि ये इनपुट आउटपुट मोड है इसीलिए. सो दिस इज अ टेबल ऑफ कंट्रोल वर्ड बिट्स. These are the different bits D0 to D7. This is a control word means actual data. और पोर्ट A, पोर्ट C अपर, पोर्ट B, पोर्ट C लोअर, इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? ये. राइट? अगर यहाँ पे 1 होगा पोर्ट C लोअर तो आउटपुट पोर्ट होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 भी होगा. राइट? पोर्ट B में क्या है? अगर 0 होगा तो ये आउटपुट पोर्ट होगा. यहाँ पे भी पोर्ट C अपर में अगर ये बिट 0 होगी दैट मीन्स आउटपुट. वैसे यहाँ पे सभी लिखा हुआ है. 1 होगा तो इनपुट, 0 होगा तो आउटपुट. तो आपको एक ये फिगर याद रखनी है, ये टेबल याद रखना है. नाउ कंट्रोल वर्ड एग्जांपल. राइट अ प्रोग्राम टू रीड कंट्रोल वर्ड फ्रॉम पोर्ट B, डिस्प्ले एट पोर्ट A एंड रीड अपर 4 बिट फ्रॉम पोर्ट C. सो हम क्या करेंगे? पहले एक्यूमुलेटर को लोड करवाएंगे D3 डेटा से विद द कंट्रोल वर्ड 1 1 0 1 1 1 0 एंड 3. दैट मीन्स 0 0 1 1.
अब क्या करवाएंगे, उस डेटा का आउटपुट पोर्ट पे हम लिखेंगे, राइट, वर्ड इन कंट्रोल रजिस्टर 83, राइट, रीड द स्विचेस एट पोर्ट D, ये राइट करने के लिए, ये रीड करने के लिए, राइट। देन हम जो डेटा है, ठीक है, उसको डिस्प्ले करवाएंगे पोर्ट A पे एंड रीड एट पोर्ट C, डिस्प्ले करवाया फिर रीड करवाया। A9 is logical and to mask lower 4 bit, ठीक है। अब इसके साथ अगर एंड ऑपरेशन करेंगे इस डेटा का तो क्या हो जाएगा, लोअर बिट मास्क हो जाएगी, दैट मींस 0 हो जाएगी। नाउ DSR दूसरा मोड कौन सा, एक था इनपुट आउटपुट मोड जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब कौन सा मोड है, DSR। सो इसमें क्या होगा, D0 to D7, राइट। तो ये कौन सी बिट है, DSR मोड इज अ पोर्ट C bit set reset mode and the individual bit of port C can be set or reset by writing control word in the control register. So this is a control word format of DSR mode. So ये जो है the pin of port C is selected using bit select bits D1, D2 and D3 bit select bits and set or reset is decided by this. ये बिट के ऊपर से सेट है या रीसेट है ये डिसाइड होगा D0 के ऊपर से, राइट। सो the DSR mode affects only one bit of port C at a time. So ये बिट सिलेक्ट ये 3 बिट पे होगा D1, D2 एंड D3। अगर 0 0 0 होगा दैट मीन PC 0 नंबर की पिन सिलेक्ट होगी PC 0। अगर 0 0 1 है दैट मीन्स PC 1 अप टू 1 1 1 देन PC 7। These are not used, right, ये जनरली सेट होगी 0 पे एंड ये डिसाइड करता है अगर ये 0 है D7 बिट दैट मीन्स इट इज अ DSR, राइट। So this in this mode any of 8 bits of port C can be set or reset depending on D0 of the control bit. And this bit is to be set or reset is selected by bit select bits. Concept D3, D2 and D1 of the CWR means control word register. ये control word register की ये तीनों bits है D1, D2 and D3 इसके ऊपर डिपेंड है। This bit is set or reset is selected by bit select flex D3, D2 and D. So DSR control word affects one bit at a time, right? This bit are set using DSR mode remains set unless means जो DSR mode है उसके यूज से जो ये बिट्स सेट हुई है, ठीक है, ये एज इट इज ही रहेगी जब तक हम कोई भी बिट को चेंज ना करें, राइट। वो अपने आप चेंज नहीं होगी, जैसे यूजर इनपुट वो चेंज होगी। सो टू सेट एनी ऑफ bit of port C, bit pattern is loaded in control register. ये bit pattern control register में लोड होगा तभी हम चेंज कर सकते हैं, right? So DSR mode is selected, it will not affect any input output mode, right? Does not affect the input output mode.